हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ बी हाइक चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erst while Madras state. My father, Zainuddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an idol helpmate in my mother, Ashima. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that the far more outsider ate with us than all the members of our town's family put together. तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात हो रही है, जिनका जन्म मिडिल क्लास फैमिली तमिल में हुआ था और वो रामेश्वर में थे, जिसको मद्रास बोलते हैं। उनके पापा का नाम जैनुद्दीन था, उनकी माँ का नाम असीमा था और उनके पापा एक ईमानदार व्यक्ति, ना ज़्यादा उनके पास समृद्धि थी ना कुछ था, लेकिन वो एक ईमानदार व्यक्ति और खुशहाल फैमिली में रहते थे। और उनकी माँ हर दिन पता नहीं कितने बंदों को खाना खिलाती थी वो सब साथ में बैठ के खाते थे। आगे चलते हैं। I was one of many children, a short boy with neither undistinguished look, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large Focasa house made of limestone and bricks on the Moscow Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all incidental comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicines, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो उनके जो पापा थे वो ना ज़्यादा हाई फाई में रहना नहीं पसंद करते, वो नॉर्मल रहते थे। वो उनको खाना पीना कपड़े लत्ते सब देते थे, लेकिन वो उनके पास बड़ी बड़ी ये उनका शौक़ नहीं थे कि मेरे पास ये सब हो, मतलब। और उनका घर एक लाइमस्टोन एंड ब्रिक से बना हुआ था, अब रामेश्वर में था। नेक्स्ट चलते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक out in 1939 when I was 8 years old. For a reason I have never been able to understand, a sudden demands for trimming seeds paid in the market. I used to collect the seeds and sell them to provision shop on Moscow Street. A day collection would fetch me pencilly sum of 1 anna. My brother-in-law Jaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in the nominee. Our area belonged isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwar station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanauskodi. That forced my cousin Sasmuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I feel the slot, Samusuddin helped me on my first wage. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. वो जब वॉर हुआ था, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में, तो वो बहुत छोटे थे, 8 साल के थे। उन्हें कुछ इसके बारे में समझ नहीं थी कि वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तब उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो उनको स्टोरियाँ समझाते थे कि कैसे हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है। और वो जो रामेश्वरम जहाँ वो रहते थे, वो ना ऐसी जगह थी जो वॉर से मतलब वो वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, वो अनअफेक्टेड थी। और वो उनके जो ब्रदर जो उनके कज़न थे
वो वहाँ ना रामेश्वर के स्टेशन पे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो उनके साथ उनको एक हेल्पर चाहिए था और उन्होंने इनकी हेल्प करी, जिससे इनकी फर्स्ट इनकम आई। आगे चलते हैं। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socioeconomic and emotionally environment and are trained in a certain ways by fingers of authority. I inherit honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in godness and deep kindness, and so did my three brothers and sister. I had three close friends in my childhood: Ramananda Sastri, Arvindan, and Siva Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As a children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramananda Sastri was the son of Pakshi Lakshman Sastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his। तो उनके जो वो थे नहीं एपीजे अब्दुल कलाम, उनके वो तीन भाई बहन थे और उनके तीन दोस्त थे। और जो रामानंदा शास्त्री थे वो ना एक बड़े से मंदिर के, रामेश्वर के बड़े से मंदिर के पुजारी के बेटे थे, और वो तीनों दोस्त हिंदू थे और ये एक मुस्लिम थे। आगे चलते हैं। Father Arvindan went to in the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Siv Prakashan became a contractor for the South Railway. During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange the boats with the special platform for carrying idols of the lords from the temple of the marriage seats situated in the middle of the pond called Ram Tirath, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandfather would tell me, the children's in our family। तो उधर जो उनके तीनों दोस्त थे, जो अरविंदन थे उनके फादर ना एक बिजनेसमैन थे, और जो शिव प्रकाशन थे वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे साउथ रेलवे में। तो और उनकी जो वो उनका घर नहीं था, वो ना वो जो रामायण में पुल होता है ना उसके करीब ही था। वो बहुत मतलब मंदिरों से बहुत जय मुस्लिम होके वो मंदिरों से लगाव रखते थे। आगे चलते हैं। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwar Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I have always sat in the front row next to Ramananda Sastri, who wore the scared threads. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy in accordance with our social ranking. As the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Sastri. He looked neutral, downcast, as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a rising impression on me। तो एक दिन जब वो स्कूल जो 5th क्लास में थे, वो उन्होंने स्कूल में रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में एक नया टीचर आया, और ये जो एपीजे अब्दुल कलाम थे ना वो फर्स्ट रो में बैठते थे, जो कि रामानंदा शास्त्री की मतलब साथ में ही बैठे थे। तो जो न्यू टीचर आई थी उससे ना ये बात नहीं पच रही थी कि एक इतने बड़े पुजारी का लड़का एक मुस्लिम के साथ बैठा है। उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को बोला कि आप उठो और पीछे चले जाओ। लेकिन जो वो रामानंदा शास्त्री थे वो ऐसे देख रहा था कि उनको भी अच्छा भी उसको भी नहीं अच्छा लगा, ना एपीजे अब्दुल कलाम को। आगे चलते हैं। After school, we went home and told our respective parents about the incidents. Lakshmana Sastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spit the poisons of a social masculinity and
communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quiet the school, and the island not only did the teacher regret his behaviors but the strong sense of convocation Lakshmana Sastri conveyed ultimately defends this young teacher. तो वो स्कूल ख़त्म होने के बाद वो दोनों गए अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्टिव मम्मी पापा को अपने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था उनके साथ। तो लक्ष्मणा शास्त्री थे, उन्होंने टीचर को बोला कि आप इनोसेंट चिल्ड्रन के मासूम बच्चों के मन में क्या ला रहे हो, कैसे कर रहे हो। आगे चलते देखते हैं क्या होता है। On the whole, the small society of Rameshwaram was a very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subrahman lays through an orthodox Brahmin with a very conservative vibe was a something of a rebel. He did his best to break social barriers so that the people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the high educated people of the big cities. तब उनके जो साइंस के टीचर थे शिवासु ब्राह्मण, वो एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी ना वो बहुत मतलब भेदभाव करती थी जात जूत को लेके। लेकिन जो वो थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, वो नहीं देखते थे किसी को क्या क्या कौन सी जात है कौन सी जात का नहीं है। तो आगे चलते हैं। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। हिज वाइफ वॉज अ हॉरिफाइड at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her restless pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Sivasu Brahmin Layers was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his oven hand and sat down beside me and ate his meals. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Sibrahman Layers invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decided to change the system, such a problem had to confronted. When I visited his house the next week, Sivasum Brahim Layer's wife took me inside her kitchen and served me food with her oven hand. तो जो उनके साइंस के टीचर थे ना, उन्होंने एक बार अब्दुल कलाम को अपने घर पे बुलाया खाना खाने के लिए। लेकिन जो उनकी पत्नी थी ना, वो बोली सोचा कि एक मुस्लिम लड़का हमारे किचन के अंदर आएगा तो हमारा किचन मतलब अशुद्ध हो जाएगा और वो कैसे खाएगा। मतलब वो उन्होंने बोला कि मैं उसको खाना नहीं परोसूँगी। जो उनके साइंस के टीचर थे वो अपनी पत्नी के ऊपर बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने बोला कि तुम मत परोसना खाना, मैं परोस दूँगा खाना। तो जब अब्दुल कलाम आए तो जो उनकी वाइफ थी ना, वो दरवाजे के पीछे से देख रही थी कि वो कैसे खा रहे हैं, कैसे चावल खा रहे हैं, कैसे पानी पी रहे हैं। फिर उनके जो पति थे ना, उन्होंने दोबारा बुलाया कि दोबारा आना। फिर तीसरे बार जब वो आए तब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने खुद उनको खाना परोसा। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district educators in Rameshwaram. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the struggle not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalia Griban to my hesitant mother. Your children are not your children, they are the sons and daughters
of life longing for itself. They come through you, but not from you. You must may give them our love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. तो गाइज ये रही हमारी क्लास नाइन्थ बी हाइव चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड। कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बहुत सारे प्यार दीजिए। थैंक यू।